In the name of Allah, the most merciful, most gracious, and most beneficent. Prophet Muhammad said, peace and blessings of Allah be upon him. One whose heart does not contain anything from the Holy Quran is like a deserted house. Now today, I will deliver another lecture for class 11th, unit cell biology. And today, we will discuss ultrastructure and functions of chloroplast. Okay. You met the yawan chloroplast, which are green colored plastid asan, green plant mans, leaven mans asan. The pattern me yaw at matlab amik origin kya chu, amik discovery kis kar gaye, amik origin one me yaw, amik occurrence one me yaw, shape one me, size one me, chemical composition number one me. So that part we have discussed. The one choice as amik ultrastructure, the big function kya chu, chloroplast. Your scientist are Mayer gave ultrastructure of chloroplast. Chloroplast is in show and ultrastructure wushmat kain Mayer. Why saw Mayer kashwana Mayer choice chloroplast cho acha the membrane asan. Ago outer membrane beago inner membrane. Chloroplast has two membranes. Chloroplast is the membrane asan. Ago outer membrane and inner membrane. Outer membrane and inner membrane. Both the membranes are smooth. Both the membranes are smooth. Okay. Both the membranes are smooth. Yes. Each membrane is 50 to 60 angstroms. Okay. The chloroplast show that's the membrane asan, our outer membrane, our inner membrane. Doshway membrane is smooth asan. The membrane is 50 sheared angstroms. Okay. Shabash. Let's show. Suppose this is chloroplast. That's the membrane asan. Ago outer membrane, ago inner membrane. Suppose you go outer membrane. This is inner membrane. Tanvay membrane is smooth asan. Okay. Even membrane and don darmiyan ch khali jaya asan. That's on periplastidial space. As space on periplastidial space. Chati. Okay. The space between the two membranes. The space between the two membranes is called periplastidial space. Such as 25 to 75 angstroms. Yani yes human membrane and don darmiyan space is called periplastidial space. Inche 50 per 5 yes ye angstrom awesome. Okay. Shabash. तो वही सवाल using the outer membrane outer membrane is more permeable than inner membrane. Outer membrane is more permeable. Outer membrane is more permeable than inner membrane. Outer membrane is more permeable than inner membrane. Because outer membrane
has more pores and less proteins, while inner membrane has less pores and more proteins. Okay, shall I try to understand? Using outer membrane is ज़्यादा permeable आसान, inner membrane खोल. क्या कि outer membrane में pores ज़्यादा, protein कम. Inner membrane में protein ज़्यादा, pores कम. तो लिहाजा करिए outer membrane आसान ज़्यादा permeable to biochemicals. Okay. शाबाश. तो यम गई membrane. वहीं जब वो अंदर नजर अंदर क्या शक्ल आसान? अंदर शा आसान आत. इनमें जो जानी ground substance है इनमें आसान. Yes, stroma. The ground substance of chloroplast is called stroma. Yeah, back now colloidal matrix. Okay. Is the name of the ground substance stroma. Masala stromas mas kya chasa? A stromas mas ware cheez asa. Stroma contains. Stromas mas gore asa ribosome. As ribosomes asa. Magar tim 70S type ribosomes asa. Tim plastidoribosomes. Okay. But you say stroma chasan, yasman chasan, plastidoribosomes. Try to understand. Katmanshim discrete asan. Yaman disconcholan. Thylakoides. तो गल हसन कि ये मनो पता है गड़वान में ये मास्मन ये मनो राइबोसोम चासन तो ये मनो राइबोसोम मन चवाना प्लास्टिडोराइबोसोम्स गत में राइबोसोम्स थे आखिर में राइबोसोम आसन बिशस ये मिशन बराबर 70S टाइप जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स बी क्या आसन आत्मा बी आसन स्टार्च ग्रेन्स आत्मा फैट ग्लोब्यूल्स suppose you miss starch greens yim chatmaz asan starch greens chatmaz asan starch greens atmaz asan fat globules suppose yim fat globules okay शाबाश तो बी क्या आसान अतमन एमएलआव अतमन छ बी आसान एमएलआव अतमन छ डीएनए आसान सपोज डीएनए छ अतमन आसान जैसे कि छ आरएनए ते आसान कम मकदारस मन जे आसान ये गो डीएनए तो ये गो आरएनए तो वो छ ट्रेसन मन आसान यानी अतमन छ डीएनए आसान अतमन छ आरएनए आसान यम छ ट्रेसन मन आसान ट्रेसेस गो कम मकदारस मन छ आसान ओके तो बी छ अतमन आसान Minerals much minerals asan. Minerals chat maz asan. Atmancho magnesium asan. Atmancho phosphorus asan. Atmancho iron asan. Copper asan. Chati. Bivine mein rahat atmancho vitamins asan. Vitamin E chat maz asan. Vitamin K chat maz asan. Okay. तो यम छ atman amin lagun chloroplasts maz. Amin law. Çarmaz asan bir क्या enzymes मुझे enzymes asan at मुझे enzyme asan ताचुना ribisco enzyme ribulose biphosphate
carboxylase. Ribulose biphosphate carboxylase. Čo enzyme kat mans asan. Okay. तो वह सवाल इस DNA आसान अत क्लोरोप्लास्टस मज यह DNA सिंगल आसान सर्कुलर आसान नेकेड आसान अत वन प्लास्टिडोम प्लास्टिडोम DNA is single DNA आसान सर्कुलर तो बेश नेकेड आसान नेकेड called तस वन प्लास्टिडोम प्लास्टिडोम ओके अत DNA आसान सर्कुलर नेकेड आसान विदाउट हिस्टोन प्रोटीन तस वन प्लास्टिडोम ओके so all these are the substances present in this stroma. This is called a stroma. Yes, one sir see go ye mein phedi hi trai. This is stroma. Okay. तो वो जो पर सवाल पर अहम चीज वह स्ट्रोमास मस ब्याख अहम चीज आसन स्ट्रोमास मस आ स्ट्रोमास मस यम डिस्क आसन यम डिस्क बने में यम डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स तो यमन डिस्कन च वन thylakoids. Stroma also contains disc-like structures called dimension thylakoids. एक यम गए thylakoids यम डिस्क बनाए में यम गए thylakoids यम जन में अपन यम डिस्क बनाए यम डिस्क they are thylakoids. Okay. यमन डिस्क वना thylakoids. वही सवाल यम thylakoids छे यम छे स्टेक्ड फॉर्म मज आसन वन अबव द अदर तो यम छे आ ग्रुप आख बनावन लगभग 10 पे 7 thylakoid रलन यम बनावन आ ग्रुप आख तब ग्रुपस पर नाम ग्रानम छाठी तो यम वन प्लूरल ग्राना मुश्त छ ओमत यानी अतन लिखो है about 10 to 100 thylakoids form 1 granum 10 to 100 thylakoids बनावन छ 1 granum suppose you go granum you go granum thylakoid हम ग्रुप गो granum वही सवाल अकिस क्लोरोप्लास्टस मस कूतिया ग्राना छ आसान उस्त छ ओमत यम छ आसान 40 to 60 grana about 40 to 60 grana are present in one chloroplast अकिस क्लोरोप्लास्टस मस छ आसान 40 पे 60 grana अकिस क्लोरोप्लास्टस मस छ आसान 40 पे 60 grana ओके वही सवाल यम ग्राना छ आसान सो ये ग्रानम ये ग्रानम यमन ग्रानमन कुछ कनेक्ट करन यमन छ करन कनेक्ट तिमन छ वनन लेमली छ करन कनेक्ट कमन ग्राना वात लिखो है ग्राना आर connected by lamely या यमन छ वनन ब्याक नाव फ्रिट channels यम छ कनेक्ट करन कमन ग्राना ओके तो वह सवाल इस thylakoid छ वन आ thylakoids मस क्या छ आसान आ thylakoids मस छ आक ब्याक अख चीज आसान अहम चीज आ thylakoids मस आसान सपोज अगर तुम बनाओ इस अख thylakoid तुम बनाओ इस कुछ आसान ये thylakoid आ thylakoids मस क्या छ आसान
अत ब्याक अहम चीज तिमन वन कॉन्टोसोम्स 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 suppose this is thylakoid issue thylakoid okay thylakoid thylakoid तो अथ मन कॉन्टोसोम कॉन्टोसोम्स गो थाइलाकॉइडस मन कॉन्टोसोम्स तिमन कॉन्टोसोमन मन क्या तिमन मन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स थाइलाकॉइड्स possess कॉन्टोसोम्स तो which contain chlorophyll molecules यानी अकिस कॉन्टोसोमस मन 200 to 300 chlorophyll molecules 200 to 300 chlorophyll molecules are present in one contosome चूंकि इमन मन कॉन्टोसोमन मन chlorophyll molecules तमी पे मन नाव PSU photosynthetic unitus यानी अति असली गसन photosynthesis अति chlorophyll molecule यो absorb करा light छा ठीक तो लिहाजा कर पे मन नाव PSU means photosynthetic unitus PSU photosynthetic unitus okay शाबाश तो तय थो याद इस थाइलाकॉइड थाइलाकॉइडस मज कॉन्टोसोम्स कॉन्टोसोमन मज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स अकिस कॉन्टोसोमस मज 200 पे 300 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तो लिहाजा कर योही कॉन्टोसोम करन एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी लाइट करन एब्जॉर्ब तो लिहाजा कर रोल इन फोटोसिंथेसिस तिमन पे नाव फोटोसिंथेटिक यूनिट्स ओके शाबाश यहाँ मैं एक क्वेश्चन रखूंगा वो एग्जाम में आया नीट एग्जाम में आया एक क्वेश्चन क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन नीट में आया ये ऑब्जेक्टिव क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल कथ मन ए पार्ट लीव्स बी पार्ट क्लोरोप्लास्ट C part stroma D part grana शाबाश ये नीट एग्जाम में आया ये क्वेश्चन क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन इसको मुझे बात नहीं इजी ऑब्जेक्टिव मगर ये ऑब्जेक्टिव इट इज वेरी टफ ये टफ ऑब्जेक्टिव तिकेज क्लोरोफिल यूजन वुशन क्लोरोफिल कथ मन अगर गोडुक जवाब निमो लीव्स यह करेक्ट आंसर क्या लीव्सन मज क्लोरोफिल रोटस मज क्लोरोफिल कह तो लिहाजा कर लीव तो जवाब दोम गो क्लोरोप्लास्ट हेको वन रात वन क्लोरोप्लास्ट इट इज ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल गो ये अत वनो राडोप्लास्ट वनो कह फियोप्लास्ट वनो कह लेकोप्लास्ट वनो कह बल्कि क्लोरोप्लास्टस मज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल okay this is also correct response वो स्ट्रोमा यूजन ये क्लोरोप्लास्ट कैरेक्टर गो स्ट्रोमा क्या गो स्ट्रोमा इज द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट कोई पार्ट ये क्लोरोप्लास्ट मानो इज करेक्ट ऑप्शन स्ट्रोमा क्या मानो स्ट्रोमा इज आल्सो करेक्ट अच्छा अत पे ग्राना ये स्ट्रोमा गो कैरेक्टर तो ग्राना क्या गो क्या स्ट्रोमास मज ग्राना लिहाजा कर वनो
all the four options are correct. Yes, choshway option correct. Magar that asan objective. Take the most appropriate answer. Actually, katen chi chlorophyll molecule lastas. Cha theek. Ko lihaza kirit yas man agar show si man soran option ones. Yes, correct response go grana. Grana is the correct response. Because yim grana chi yim ni man chlorophyll molecule. Okay. Agar मैं एम्पत ब्याक ऑप्शन ये thylakoid. तेरे उस thylakoid ऑप्शन देखो. तेरे उस तो chlorophyll molecule. अगर ब्याक ऑप्शन ये कांटोसोम. तेरे लेवल लास्ट अस कांटोसोम. Finally इच कांटोसोम. इनमें मतलब इसमें chlorophyll molecule छे. Okay. Okay. This is the structure of what? Chloroplast. Finally, functions. Functions of chloroplast. Which the chloroplast क्या च काम करन? Goडनुक point छो, it helps in photosynthesis. Is an main function च अमिच, सो इश करन photosynthesis. Okay. क्योंकि photosynthesis में जो गज़ा गसन तैयार, ये plant च करन food prepare by the process of photosynthesis. क्योंकि food च prepare गसन ये chloroplast में, तमी पे वत नाव hence called. After now, kitchen house. Ishor मान सेलिहुन किचन. इसके किचन में गज़ा इस तैयार करा. तो कुछ सेलिहुन किचन की करार यान देना. Chloroplast. Okay. Number 2. इसका काम it stores food. इस food कारण store in the form of आगो starch grains. Begin fat globules. Yani ती मशहूर plastoglobules. मैं ते आज होई था. Suppose कि fat globules है में, starch grains है में, इस फोड़ ते करना है. क्या? Store. Okay. तो number next function. So all greenery on earth is due to chloroplast. Okay. Yes, greenery. This is sabzar zameen spectrum. It is because of chloroplast. It is because of chlorophyll. Chati, this chlorophyll, chloroplast man shasam. I miss such greenery zameen spectrum. Number next. It helps us in energy transduction. Ish energy transduction kar. So ish kar solar energy karani convert into chemical energy. Solar energy karani convert into chemical energy. Yani ye light aspect pevan chhe. Solar energy aspect pevan chhe. Ish kar solar energy convert into chemical energy. Chemical energy means ish banavan food. Food banavan. Chati. Test banav energy transduction. Okay. Energy transduction chi kar. Solar energy can convert into chemical energy. Okay. The number next is karani kaam. So go. It helps us in protein synthesis. Ishkaram protein synthesis. Ko protein बनावनस में तशी मदद कर. क्या इसमें राइबोसोम. अपने जो राइबोसोम जो protein बनावनस में ते रोल कर. ब्याख लेखो. It helps us in heredity. This heredity must be role कर. Heredity must. As it contains DNA. अपने जो DNA इस transmit करन characters from parent to offspring I think. तो लिहाजा किरत ची heredity must be role करन as it contains DNA. इस protein बनाने में role करन as it contains ribosomes. Okay. तो number next function क्या करन chloroplast. So go ये करन काम ये चो pick up करन carbon dioxide from the atmosphere. Okay. तो सुच पति use करन for photosynthesis. लिहाजा किरत ची बचावन इस केम निश global warming निश. It
absorbs lot of carbon dioxide from the atmosphere, from the atmosphere, and prevents global warming. Prevents global warming. It absorbs lot of carbon dioxide from the atmosphere. Suppose a animal yam duniyahas mans yim travan carbon dioxide never. Ithen ti kunje combustion go materials adraw carbon dioxide. Ithen decomposition go adraw carbon dioxide. Sorry atmosphere mans. Go agar carbon dioxide level atmosphere mans vai increase gay. There is greenhouse effect increase. Agar greenhouse effect zyada go, amse gets global warming. Okay. Magar chunke ये क्या करन काम ये प्लांट ये इस करन काम ये absorb करन ये carbon dioxide from the atmosphere. ये absorb कर sorry carbon dioxide and कर use for photosynthesis. The level कर greenhouse effect कम गसन अश global warming निश बचा. Okay. The B function देखो ये सही है. It releases oxygen during photosynthesis. In photosynthesis manch neran oxygen which is used by all living organisms for respiration. For respiration. Okay. In photosynthesis gasan oxygen release gasan. You see oxygen release go. Tamam दुनियाहस मज यम लिविंग थिंग्स चाहे सो प्लांट पान या एनिमल्स यम सारी ऑक्सीजन यूज करन फॉर देयर रेस्पिरेशन. Okay. So all these are the functions of chloroplast. So with this we have concluded this chloroplast, its structure and function. So tomorrow inshallah we shall take another cell organ that is called lysosome. So you prepare yourself for lysosome on tomorrow. Okay, thank you. Thank you very much.